एलोकेशन वो ज़रूरी फॉर्मूला है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आपको जोखिम से बचाता है, जो महंगाई से आपको बचाता है, जो आपके आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करता है और हाँ, मुनाफा भी कमा कर देता है। एसेट एलोकेशन आपके आर्थिक सपनों को पूरा करने के लिए कोई नया रामबाण नहीं है। ये आपकी निवेश की रणनीति में वो पहला कदम है जो आपको सबसे पहले लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ईटी नाउ स्वदेश पर आप द मनी शो मनी मंत्रा की ये खास पेशकश देख रहे हैं, जहां पर आज हमारा फोकस होने वाला है एसेट एलोकेशन पर। साल कोई सा भी हो, हमेशा एसेट एलोकेशन पर जब भी हम लंबी निवेश की रणनीति की बात करते हैं तो बात आके अटक जाती है, क्योंकि ये एक बात है जो निवेशकों को बड़ी आसानी से अगर हम समझाएं तब भी समझ में नहीं आती। और एलेक्स, आज हमारा जो मकसद है दर्शकों को एसेट एलोकेशन के मकसद को समझाना है, इसकी जरूरत को समझाना है। Absolutely. You said it, Kavita, and I couldn't have said it better. Asset allocation, they say, is the most important thing for you to learn from the point of view of your managing your finances. In fact, it differs from person to person. It depends on your individual circumstances. We'll speak about what it is and what you need to bear in mind so that you can set your own asset allocation strategy. We've got a panel of experts to help you today. We've got Rupa Venkatakrishnan, who is a director at Sapient Wealth. We've got Shefali Satsangi, who is the founder and chief executive officer of Funds Veda. And we'll soon be joined by Dhruv Mehta, who's chairman of Sapient Wealth Advisors and Brokers. But I want to start by asking you a question, Rupa. And I know this is a concept that's very close to your heart, as I'm sure the other panelists will agree. Asset allocation is absolutely crucial in terms of managing your finances, as I said already. Why is that? Why is it 9/10 of the rule? Thank you, Alex, and good evening, all the viewers. Asset allocation becomes a very important part of an ingredient when you construct your portfolio. Correct? What happens is asset allocation at all points of time automatically removes your emotions from investing, because markets are cyclical and you really don't know when to move in and when to move out. I think most of the time we look at a very short-term period of time, but our horizons of wealth creation and long-term, short-term goals are going to be for a longer period of time. So asset allocation, when you start investing, when you're constructing your portfolio, becomes a very important part of the ingredient. एलेक्स, बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से रूपा आपने बुनियादी बात रखी, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए शिफाली, मुझे ये बताएं, एसेट एलोकेशन, जैसा कि एलेक्स ने भी शुरुआत में कहा, कि एक बहुत ही कस्टमाइज सेटअप है। हर किसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना होता है कि उनके लिए किस तरह का आर्थिक लक्ष्य है, उनकी रिस्क की एपेटाइट क्या है, और जो अपने लक्ष्य वो निर्धारित करना चाहते हैं उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है। लेकिन क्या एसेट एलोकेशन भी लगातार बदलती रहनी चाहिए? क्योंकि समय बदलता है, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या निवेश के विकल्प आपने अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं शिफाली, उनकी परफॉर्मेंसेस भी बदलती हैं। अब ऐसे में एक इंसान अपने एसेट एलोकेशन में तब्दीली अगर करना चाहे तो वो कौन सी बुनियादी बात होगी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, it's actually not a one size fits all call over here. There are a lot of parameters that you need to look at when you're trying to rebalance an investor's portfolio. सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी होती है कि आपके जो इन्वेस्टर है उसका गोल जो है वो पास में है या नहीं. If an investor is say nearing his or her investment goal, we need to migrate from a riskier asset class to a safer asset class to safeguard that corpus which he has accumulated over a period of years. Now, second thing that you need to look at is there are three main market drivers. So a market rally could be liquidity driven, it could be a fundamentally driven rally, it can be a sentiment based rally. So when one witnesses that this is not a fundamentally driven rally and there are unjustifiable valuations and there's so much of euphoria and exuberance in the market, so that can be a compelling reason
to rebalance your portfolio, to stagger out the profits in a phased out manner, and move out from overvalued assets into safer assets. So yes, since it is a liquidity driven rally right now, due to the continuous stimulus which has been given by the central bank, we saw a lot of investors who had substantial long-term gains and who had clocked returns over and above certain predefined benchmark return. They had booked a lot of profits in a staggered manner. Thirdly, when an investor's existing asset allocation deviates or digresses from his defined asset allocation or the ideal asset allocation, which had been chosen earlier because of the risk profile, according to the risk profile and according to other requirements, then it will be a time to rejig the portfolio. Fourthly, you can say that in case there is a personal change in circumstances, say you can say that if there is a job loss or health issues or a death in the family, या कभी भी किसी को emergency requirement चाहिए है funds की, so that can be a compelling reason to move to a safer asset class and rebalance the portfolio. Lastly, हम ये भी देख सकते हैं कि rebalancing तब भी करनी चाहिए जब when we want to weed out the consistent underperformers from your portfolio. Those schemes which have been consistently not performing well. So when there is a bull market rally, it is a very good time to actually move out of these laggards. So these are the cases where rebalancing and you can rejig your portfolio. Kavita? Understood. I'm going to come to you next on this, Rupa. We're waiting for Dhruv to join in as well. But in terms of when you should rebalance, we're in a scenario right now at the start of 2022, and a lot of major events. The Fed is going to start raising interest rates. We're talking about liquidity globally likely to reduce from the heady levels that they have been at. How does one position themselves right now, both if you have a substantial position in the market right now, or if you're starting out at this stage? There has to be a strategic approach to this as well. So Alex, if you have already invested your assets, okay, and if you are too skewed towards equity because you have just seen the past returns and you've just gone and put 100% of your money in equities, then obviously at some point of time, if your risk appetite is not there to take the volatility, which is at any point of time, we have to understand equities will always correct by 20-25%. It could happen at any point of time for any reason that could be. But what's important is to understand saying that what is the risk appetite that you have within you. Now, if you don't have the risk appetite and the markets have run up, and if you're seeing the volatility, if you don't have the stomach to take that, then obviously it's better to move, take your profits and sit on the sideline. But the difficult part is, when do you move in? I think most of the time, when you talk about moving in and moving out, the risk is either the regret of missing out a rally or regret of not getting in early before the crash. That there is always a debate between this. So that is why asset allocation plays a very important part. When you're entering the market, if you understand your risk appetite, you can actually allocate between your debt and equities. Under equities also you can distribute between your large cap, mid cap, and small cap. You can add gold as an asset class so that it cushions your portfolio at some times when there is an inflationary kind of pressure. When you talk about debt, even debt can have a way that you can do an asset allocation between short term, long term, dynamic, gilt, liquid. If you do an asset allocation and stay put your assets, then your assets get cushioned at any point of time because markets are going to be cyclical. Markets are always dynamic. There is never a case in the last 20, 30 years. There is an interest rate moving up, interest rate coming out,
inflation moving out, inflation moving out. It's a dynamic kind of a position, so it's very difficult for people to move in and move out. कि अगर 2021 की तेजी बाजार में नहीं देखी उन्होंने और अब आने वाले वक्त में वो कभी शायद निवेश नहीं कर पाए, तो आपको ये समझ लेना होगा कि बाजार को टाइम आपको नहीं करना चाहिए और ये कोशिश आपकी बेकार ही जाएगी। जब भी आपके पास पैसे हों, आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए एसेट एलोकेशन से। हमारे साथ ध्रुव मेहता, चेयरमैन सेपिएंट वेल्थ एडवाइजर्स एंड ब्रोकर्स भी जुड़ गए हैं। ध्रुव, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। हमारी बात हो रही है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसेट एलोकेशन। कई मुद्दे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, क्योंकि एसेट एलोकेशन ना आम जनता के दिमाग में हमेशा इक्विटी और डेट को लेकर ही होता है। मैं चाहती हूं कि आप इसके जो चारों पैरामीटर्स हैं ना, उस पर बात करें। न केवल इक्विटी बाजार में आपको निवेश करना होता है, न केवल फिक्स्ड इनकम में आपको निवेश करना होता है, आजकल आपको तमाम तरह की नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी फॉर्मेट है एसेट एलोकेशन का, उसमें क्या क्या निवेश के विकल्प शामिल होते हैं, ये बताएं। चलिए, शायद ध्रुव के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन शिफाली, अगर आपने ये सवाल सुना है तो आप जवाब दे सकती हैं। देखिए कविता, एसेट एलोकेशन एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, जहां you are spreading out your investments across different asset classes. So you can have a asset mix of equity, fixed income, real estate, gold, mutual funds, cash, money market securities, etc. अब उसका objective क्या होता है asset allocation का? To diversify your investments into different assets so as to minimize the amount of risk which is inherent in each asset class. तो हर एक asset class का एक रिटर्न प्रोफाइल होता है, एक रिस्क प्रोफाइल होता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे 100 रुपए लगा रहे हैं, तो 100 रुपए में से ये नहीं कि आपने 100 का 100 आपने रियल एस्टेट में लगा दिया। यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई कि गोल्ड थोड़ा सा खरीद लिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा डायरेक्ट एक्विटीज, रियल एस्टेट खरीद लिया, फिक्स्ड इनकम में भी डालिए। तो इट शुड बी अ कंप्लीट बास्केट ऑफ एसेट्स, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ट्रेडिशनल विजडम के don't put all your eggs in one basket. So we firmly believe that जो magic of wealth creation होता है, it lies in the right asset allocation, है ना? क्योंकि जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं इन सारे मल्टीपल एसेट क्लासेस में, वो आपका जो एक न्यूट्रलाइज कर देता है वॉलेटिलिटी का, एंड इट हेल्प्स यू टू मैनेज द रिस्क बेटर। सो एक बहुत ही अहम पहलू वेल्थ मैनेजमेंट का होता है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक टाइम पे, हर जैसे रिमेंबर कि एक एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी वन एसेट क्लास जो आपको ऑप्टिमल रिटर्न दे रहा है, एक एसेट क्लास होगा जो आपको सब ऑप्टिमल रिटर्न दे रहा है। तो आपका रिस्क ऐसे आयरन आउट हो जाता है, इवन आउट हो जाता है। सो अनदर थिंग मैं आपको एक ऐड करना चाहूंगी कि रनिंग बिहाइंड एन एसेट क्लास जिसने एक सुपरलेटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, या फिलिंग योर पोर्टफोलियो विद अ थीम के जो अभी रिसेंटली प्ले आउट हुई है, दैट शुड नॉट बी डन, बिकॉज वो वॉलेटिलिटी को आपके पोर्टफोलियो में बढ़ा देगा। सो नो, नेवर एवर गो ओवरबोर्ड ऑन एनी एसेट क्लास। सो thanks so much for spelling that out. We're going to be talking about this in more detail. And Dhruv Mehta, we've finally been able to connect with you. Dhruv, I'm coming to you. We've already spoken about the importance of asset allocation, what it is, and how do you start with it. But I think a common problem that a lot of people face, and this is quite a practical issue, is that they're told that when they have shorter term goals, they need to allocate money towards fixed income instruments. If they have longer term goals like retirement, for example, they need to allocate towards equity. So how do they balance their short term and long term goals and the overall asset allocation? Suppose they're supposed to have a 60-30-10 towards equity, fixed income and gold. How do they manage that? So I think as you said, time horizon सबसे important and is the most important element that one has to keep in mind when deciding asset allocation. The time factor is the most important thing, and generally every investor knows for what duration he wants to invest the money, or when he will need the money if it is for a specific purpose. And once that is clear, what becomes apparent is that
for a short period, you need to be very sure that when you're putting money for a 1 year, you will get the expected return on that period. And therefore, because equity is a very volatile asset, उसमें उतार चढ़ाव, it keeps going up and down. People are generally not able to figure out or predict कि वो कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा. And therefore, that is why it is advised that for short period, put your money into fixed income. And based on the time horizon, then you decide how to allocate your money. It is like बहुत simple होता है कि if I have to, my destination is long. Say for example, if I have to go from here to USA, I mean the only way of transport that is convenient or possible is that I have to take a flight. I cannot go walking, or I cannot go by train, or I cannot go by ship. But if my distance is very near, if I just want to go from Nariman Point to Churchgate, I cannot take, or it's not possible to fly. I have to walk. So asset allocation is something like that. You have to choose the asset class based on your time horizon and your, the period that you have, which will help you in deciding it. ध्रुव जी, एक सवाल एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका निवेश का नज़रिया कितना लंबा है, आपका लक्ष्य क्या है, उसके मुताबिक आपको एसेट एलोकेशन में रणनीति बनानी चाहिए। हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारा पारंपरिक प्रेम जो है वो प्रॉपर्टी से है, सोने से है। इक्विटी में हम देख रहे हैं कि निवेशकों का रुझान अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, खासतौर से 2021 में हमने देखा है जो भागीदारी बढ़ी है। लेकिन जो फिक्स्ड इनकम है ना, उसमें भी लोग अभी काफ़ी हद तक फिक्स्ड डिपॉजिट पर ही ज़्यादा मोहित रहते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ लगता है कि सिक्योरिटी ज़्यादा है। क्या समय आ गया है कि हम डेट में, अगर मैं पूछना चाहूँ, इसको डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो में? बहुत सारे हमने किस्से देखे हैं, पिछले साल की बात करें या उससे पहले भी बात करें, डेट को डाइवर्सिफाई करना एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को सुनिश्चित करना भी होता है। इसको आप कैसे समझाएंगे? वो बहुत जरूरी है। अगर किसी निवेशक को हर महीने कुछ इनकम चाहिए फॉर पर्पसेस, इट कुड बी के अपना रोज का आदमी अगर रिटायर हो गया है और उसको इंस्टेड ऑफ हिज सैलरी ही वांट्स अ रेगुलर इनकम, तो फिर फिक्स्ड इनकम ही उपाय है कि आपको जहाँ पे रेगुलर इनकम मिलेगी एवरी मंथ। सो वो तो जरूरी है फॉर अ पर्सन हु नीड्स अ रेगुलर इनकम। उसके अलावा वंस योर रेगुलर इनकम इज देन टेकन केयर ऑफ, देन यू हैव टू डिसाइड कि बाकी का मेरे पास अगर सरप्लस पैसा है तो वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। सो मेरे हिसाब से अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो देन यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो आपको एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट, ब्याज या कैश फ्लो आपको देगा। Right, understood. I want to come to you, Rupa, on perhaps the last word. And I'm sure that a lot of your clients, a lot of HNIs, a lot of people with wealth, and even those that are looking to make wealth quickly are asking about alternatives like crypto assets. We're seeing, as we speak, a bit of a correction in that market. What advice are you giving to people when it comes to these newer assets? So Alex, crypto is very complicated, so I don't understand very complicated and I don't understand it. So I have always been very vocal about it and saying that I don't understand it, so I can't give any idea on it. And I just avoid people investing in it because you can't invest in an instrument where you don't even know where is it invested, what is the basic formula of it. So I avoid people investing into cryptos. Alex, I just wanted to add, when it comes to asset allocation, I think while building any asset allocation framework, it is critical to understand that these are only not precise timing tools. This can only reduce a controllable risk. These are not guaranteed kind of things for asset allocation. You can just prevent and the downside risk on your portfolio.
All right. I think we've had an insightful conversation. And what I've taken from this panel is that consistency is absolutely key when you are planning your asset allocation strategy, more so than the product you eventually choose to make up that asset allocation strategy. It's been an absolute pleasure speaking with you, Rupa, as well as Shefali and Dhruv as well. From Kavita and myself and the team that put this show together, thank you so much for watching. It's been a pleasure bringing you this show. Do stay tuned.